when it comes to investment, fall in the value of your assets. Fall value of your asset, or I will say loss, correct, is called as a risk, correct. When I talk about investment, loss हो जाता है, इसको हम risk बोलते हैं, correct. So abhi when I talk about what risk, see we have been seeing the entire chapter by way of equity shares, वो angle से हम देख रहे हैं, right. So when I say risks, loss of dividend, number one. What are the risks in equity share? What are the risks in equity shares? First of all, you may not get a dividend. Company says I'm facing a loss. So loss, and hence no dividend declared, right? Yes, ma'am. Then I talk about sometimes they will declare a dividend. It could be low dividend that could be declared, right? See, I expect equity में मुझे see बैंक एफडी मुझे 6% तो देता ही है. इक्विटी मुझे कितना देना चाहिए? मिनिमम 20% तो देना चाहिए, right? This is what I go with the mentality, something above my bank FD. But अगर वो लोगों ने 2% दिया, so what will happen? It's a case of low dividend. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Share prices may fall, right? That is also a risk. Share prices may fall, या कंपनी becomes insolvent और delist कर देते हैं, तो क्या होता है? Liquidated. Insolvency, and hence it gets closed. Therefore पूरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा चला गया, नुकसान हो गया, बराबर. 110 में आपने शेयर खरीदा, 5-6 महीने के बाद देखा तो ₹2.50 में बिक रहा है. हिंदे से 3 महीने के अंदर नहीं बेचा, कंपनी will delist the share. तो what will happen? You're forced to sell it, correct? So that is again a loss. So these are the risks that any equity share would carry. Are you following? Are you following? Yes, ma'am. Now let us see in detail the classification of risks. These are some of the risks that we face, types of risks, right? First one, default. What is default risk? Default का मतलब क्या है? कोई अपने से उधार लेता है and then return नहीं करता है, right? Same way, even equity shares I invest. Then what happens? The company goes bankrupt. तो क्या होता है? Investor को पैसा नहीं आता है. और I invest in their debentures. और कंपनी इतना डूब गया है कि even debenture holders को वापस नहीं दे पा रहा है. So what will happen? Default risk, right? It is also called as credit risk when it comes to borrowing not returned. ठीक है? Then business risk. What is business risk? अभी क्या होता है कि particular business डूब जाता है, right? ये business मुझे लेना नहीं चाहिए था, मैंने ये लिया and then पूरा डूब गया. Therefore I say business risk. समझ में आ रहा है? मतलब आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली, वो पर्टिकुलर बिजनेस को स्पेसिफिक है, आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली, या मार्केट में मेरा नहीं चल रहा है, बाकी सबका चल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क और ऑपरेशन लीवरेज रिस्क भी बोलते हैं उसको, राइट? ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीवरेज रिस्क. ठीक है, नेक्स्ट financial risk. What is financial risk? Capital structure बराबर नहीं होता है. See, there are two types of capitals any business has. Are you aware of that?
owned capital Yes, ma'am. and borrowed capital. Borrowed capital. राइट, दोनों ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए, मतलब जितना चाहिए उतना ही रहना चाहिए. सो इफ आई हैव मोर ऑफ ओन्ड कैपिटल, व्हाट विल हैपन, टैक्स ज़्यादा जाएगा, राइट. प्रॉफिट में टैक्स होता है बराबर ओन्ड कैपिटल में. बट इफ आई हैव मोर ऑफ बोरोड कैपिटल, कंपनी में नॉट बी एबल टू रेज कैपिटल, या कंपनी का नाम कभी कभी खराब हो जाता है. तो व्हाट विल हैपन, then again it is going to be a borrowed capital. Too much is going to lead the company into problem. Are you following? So दोनों optimum level. Yes, ma'am. कैपिटल स्ट्रक्चर बराबर डिसाइड होना चाहिए, वो बराबर नहीं डिसाइड होता है, that also is a risk. Following? Any doubts? Yes, ma'am. No. Purchasing power risk. Now, for example, what happens? Even inflation causes this, right? Inflation बढ़ते टाइम क्या होता है, या rather inflation causes this. Inflation बढ़ता है, मुझे इतने सारे goods खरीदना है, I am not able to buy because they are very very expensive. My power to purchase goods and services is very low because भाव बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है. So therefore, I will not consume as much as I want to consume. Therefore, whatever is produced will again have a problem, right? Another way of talking about this is that अगर dividends fluctuate होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अभी मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, कंपनी का प्रोडक्शन वैसे ही रुक जाता है, बराबर. तो जिसके वजह से शेयर प्राइस भी नीचे गिरते हैं, या डिविडेंड यील्ड कम हो जाते हैं. देयरफॉर मेरे को इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट नहीं होता है. आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Rate risk. What is interest rate risk? If I have borrowed and the floating interest rate and the interest rate goes up, then it is a problem for me because I'll end up paying more. If I have lent and the interest rate falls, then it will again be a problem for me, right? This is also interest rate risk. Market risk. Market risk is going to be again risk in the variability, the rates of return. Like for example, market ऊपर नीचे जाता रहता है, right? Therefore, what will happen? People should buy my goods, people should sell, or rather let me put it equity का ही. इक्विटी मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे जाते रहते टाइम शेयर प्राइस बढ़ता है, शेयर प्राइस नीचे गिरता है, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क. एंड देन लिक्विडिटी रिस्क. आर यू फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? लिक्विडिटी रिस्क जो है, आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट माई इन्वेस्टमेंट टू कैश ईजिली. मतलब इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है ना, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ. जिसका मतलब है, आई एम गोइंग टू से लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा इन्वेस्टमेंट को ले ऐसे इन्वेंट्रीज में है, इन्वेंट्रीज को जल्दी बेच नहीं पा रही हूँ, करेक्ट. सो व्हाट विल हैपन, माई इन्वेंट्रीज आर टाइड अप. अभी मुझे मैन्युफैक्चर नहीं करना है, बट उसके आगे कैश चाहिए, नहीं हो रहा है. Debtors are not paying me back immediately. So this is again, I'm unable to convert my investments or my assets to cash easily. That is called as liquidity risk. Say for example, पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 घर है, तुरंत वो घर को बेचना भी मुश्किल पड़ेगा मुझे. That is called as liquidity risk. Then I talk about systematic and unsystematic, very very important risk, right? Now when I say systematic risk, it is going to be पूरा इकोनॉमी में आपको रिस्क है, राइट. पूरा इकोनॉमी में रिस्क है. सो द एंटायर एवरीबडी इज इन द इकोनॉमी. लाइक फॉर एग्जांपल, कोरोना आया and I had invested in some stocks. All the stocks fell.
क्या, क्योंकि आई एम नो एक्सेप्शन, पूरी इकोनॉमी नीचे हो रही है, राइट? पर यही अगर वो स्टॉक स्पेसिफिक है, लाइक फॉर एग्जांपल ओनली आयरन एंड स्टील सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल, then only those shares will fall. That is called as unsystematic risk. Unsystematic risk can be mitigated. मतलब आप डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, आपके पास 1 लाख है तो 10,000 आप से टेक में डालो, 10,000 बैंक में डालो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करो, 10,000 आप आयरन एंड स्टील में करो, तो आपको क्या होता है, एक सेक्टर लॉस में जाएगा तो भी दूसरे सेक्टर्स प्रॉफिट दे सकते हैं। whereas systematic risk is not mitigatable, क्योंकि कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कंट्री में, वॉर है, entire economy is affected, correct? So my investments also are affected. So this is what is called as systematic and unsystematic risk. Any doubts so far? Any doubts so far? Range, very very important measure. Have you studied range? Dispersion में हमने पढ़ा था. Yes, ma'am. What is range? Upper limit or high minus low is called as range. याद है आपको? याद है? Yes, ma'am. And then the next one is standard deviation, right? So when I talk about risk range, standard deviation, and another way also is called as variance. Variance is nothing but स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद है, सिग्मा करके, राइट? हाफ ना हिंदी में, तो इसका जो स्क्वायर है ना, दैट इज वेरिएंस। समझ में आ रहा है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। Are you following, all of you? Are you following? Yes, ma'am. We will measure range, standard deviation, and then मैं एक्सेल शीट शेयर करूं? Just go through this. Return, एवरेज लिया, एवरेज में से हर एक रिटर्न को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन x माइनस एक्स बार, देन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर टोटल किया, राइट? स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना था मुझे, ये 420 नहीं, इसको मैंने राउंड ऑफ किया, राइट? नहीं तो ऐसे ही डाल देती, इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। देन आई हैव दिस. Now what happens? This minus the arithmetic mean, I get 0.03 something. तो मैं क्या करती हूँ, 0.02734 whatever 815 variance था. Now this is my standard deviation. इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का। समझ में आ रहा है? We've already done all these things. Standard deviation is an important measure of risk in invest. ठीक है, समझ में आया?